हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे यार मेरा कैमरा क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा टूट चुका है। और आज हम लोग खेलने वाले हैं शर्लॉक होम्स द अवेकन। तो गाइस, इस गेम में हम लोग बनने वाले हैं डिटेक्टिव और हम लोग काफी सारी खोज करने वाले हैं। हम लोग है ना काफी ब्रेन यूज करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, खेलना शुरू करते हैं। ओके। अरे ये तुम लोगों ने बाईसाइकिल देखी? ये बाईसाइकिल पुराने जमाने में चलती थी तुम लोग को याद हो तो। ऐसी पुराने जमाने में चलती थी। अभी तो नया मॉडल है, लेकिन पुराने जमाने में है ना उसका टायर बहुत छोटा होता था, आगे वाले का बहुत बड़ा होता था। हम्म। वो शर्लॉक होम्स है क्या? नहीं, ये शायद से शर्लॉक होम्स नहीं है। Dr. Watson, would you kindly close the door behind हाँ, you so वो we डॉक्टर can get वॉटसन है। evidence of your सो carelessness? वुड यू क्लाइंब Watson, क्लोज टू द डोर सो यू rather कैन? good ओके। days. My apologies, Mr. Holmes. ओके, Sorry ये about होम्स taking है। you back. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. तो पोस्टमैन क्या लेके आया वो हमें देखना चाहिए। और लाइक सबसे पहले तो हम इसका है ना कैरेक्टर चेंज करेंगे। रुको, इसका कैरेक्टर चेंज करेंगे। कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए वो सब चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी टोपी लगा दी है। चश्मे में हम लोग ये वाला चश्मा लगाएंगे, क्योंकि उस जमाने में राउंड चश्मा चलता था। ऐसे वाले चश्मे कोई नहीं पड़ता था, हम लोग राउंड वाले चश्मे लगाएंगे। मूछों में हम लोग है ना ये वाली मूछें लगाएंगे, जिससे क्या लगे, हाँ फील आए कि हाँ ये शर्लॉक होम्स है। क्योंकि ये सब फील्स नहीं देंगे शर्लॉक होम्स की। ये फील देगा शर्लॉक होम्स, या फिर ये छोटी वाली मूछ देगा। लेकिन मेरे को बड़ी वाली मूछें अच्छी लगती है। तो हम इसके आगे या फिर कोई स्कार और नहीं लगाएंगे। यहाँ पर है ना इसका जो पार्टनर है उसको है ना हम लोग इस तरीके से रेडी करेंगे। या ऐसा नहीं है, ये तो इंडियन ड्रेस हो गई। ये इंडियन ड्रेस के अंदर क्या कर रहा है? नहीं, हम लोग ये वाले करेंगे ईस्टर्न ड्रेस, क्योंकि वहां पर शर्लॉक होम्स ईस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, कोई इंडियन ड्रेस नहीं पहनते थे। और यहाँ पर हम लोग कोई एक बढ़िया सा सूट सिलेक्ट करेंगे। ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला नहीं, ये परफेक्ट सूट लग रहा है मेरे को तो इसके हिसाब से। हाँ, इनके हिसाब से तो ये वाला सूट, ये सूट ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये सूट ज़्यादा बेटर लग रहा है। हम ये सूट को है ना तैयार करेंगे और यहाँ पर ऐसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं क्या चीज़ है। ओके, ये न्यूज़पेपर, ये बुक है शायद से। इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर सर्च करना है लंदन एडवर्टाइजमेंट सितंबर 28 1882। ओके, तो ये मिल चुका है, हमें पहला एविडेंस मिल चुका है। Gossip, all अब of it पहला एविडेंस uninteresting. मिलने के बाद हमें दूसरा एविडेंस ढूंढना है। यहाँ पर ये दूसरा एविडेंस है। यहाँ पर Another letter from Werner. अनदर I लेटर never फ्रॉम द replied, मैन आई and they नेवर keep रिप्लाई टू coming. द। अच्छा, ये बैना है कौन, मेरे को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि बैना का हम लोग जानते नहीं थे। तो Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. ओके, Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good मार्के service. इंस्टेंट ऑन डिलीवरिंग द बुक्स ऑन माय। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बारकेसी कुछ ना कुछ हमारे पीछे Address किया is है, Strand. तो Where is उसको it? हम जाके स्टैंड करेंगे। I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. तो अभी अभी हमें डस्टबिन को ढूंढना पड़ेगा। तो बाहर डस्टबिन पड़ा है, उसको उसके पास जाते जल्दी से जल्दी हम लोग, और देखते हैं उस डस्टबिन में क्या मिलता है। ठीक है, अच्छा ये रहा डस्टबिन। तो डस्टबिन के अंदर सबसे पहले हमें मिला है You're न्यूज़पेपर, mistaken, जो कि Dr. बहुत Watson. डर्टी हो It चुका है। is indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. ओके, इस प्लॉटिंग सॉइल। ओके, A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. ओके, ये See, टूल। Watson, the conspiracy ओके, is real. हमें अभी Someone दो put एविडेंस poison मिले in. बाहर आके। Poison? You? That's madness. Do you even have enemies that would want to kill you? Get the Okay, Strand! perhaps Get your from copy of the Cordona. Strand here! ओके, तो अभी हमें टोटल कितना एविडेंस मिल गए? 3 अंदर मिले थे और 2 बाहर, मतलब टोटल 5 एविडेंस मिल चुके हैं।
अभी इस 5 एविडेंस में है ना, हमें कोई एक ऐसा क्लू ढूंढना पड़ेगा जो हमें बता सके हमारे घर की तरफ कोई आया था या नहीं आया था। तो ये हॉर्स वाले से पूछते हैं, अगर हॉर्स वाला कुछ बता सके तो। नहीं बता रहा, इस बच्चे से पूछते हैं। Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. What happened to the newspaper? What made today headline? सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि टुडे हेडलाइंस क्या थी, क्योंकि डायरेक्टली पूछेंगे कि है ना न्यूज़पेपर कहाँ है तुम्हारा, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. What happened to my newspaper? Yes, ये हम पूछ सकते हैं अभी। Bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Sure, now I can take the day off. What did he do to the paper? Okay. did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Okay. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Ever heard of a well-read assassin? Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the Strand! Get your copy of Okay. the Strand here! बच्चा बहुत समझदार निकला और हमें है ना बता दिया कि है ना कोई एक आया था, तो हमें जाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। यू हैव गॉट अ न्यू क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज ओपन द कैश बुक। ठीक है, हमें कैश बुक खोलना है जो कि लेफ्ट साइड में हमें दिखा रहा है। With C, then navigate to the mind place inside, select relevant place of the evidence to reduce the answer. ठीक है, तो हमें जाना है माइंड में। माइंड में जाने के बाद हमें यहाँ पर ये वाला कलेक्ट करना है, फिर ये वाला कलेक्ट करना है जो कि मैच हो चुका है। वेरी गुड। तो अभी हमें ये वाला कलेक्ट करना है और ये भी मैच हो चुका है। नाइस। बर्नेस। The newsboy said the suspicious man was carrying a stack of books, and this morning, Mr. Burns, the local bookseller, delivered a novel for Dr. Watson, a cactus pine for assassin with a loud bang, a visit to Mr. Burns in order. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर विजिट करेंगे। Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. ये क्या कहना है? यू कैन पिन द एडमिन्स। इसको बंद करें, स्किप करेंगे। तो हमें जाना है कहाँ पर? बर्नेस बुक शॉप पे। तो ये आई थिंक हाँ बर्नेस बुक शॉप है, तो ये इसको हम जाएंगे, अंदर जाएंगे इसमें और अंदर जाके इससे बात करेंगे। ऑब्जर्व, ठीक है, पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व में सबसे पहले तो है ना यहाँ पर बैग अंडर आई द इफेक्ट ऑफ ओवरवर्क। ठीक है, ओवरवर्क करता है ये लौंडा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इंक, ओके इंक है, ठीक है। अभी डेफिनेटली बुक का स्टोर होगा तो इंक की क्या जरूरत पड़ेगी इसे, लेकिन पहले के ज़माने में पढ़ती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग है ना पेन से काम नहीं करते थे, वो इंक से लिखते थे, तो डेफिनेटली पढ़ सकती है इंक की ज़रूरत। हाई हील्स, वांटेड टू लुक टॉलर। अरे भाई नाटक है का। ब्लैकमेल विक्टिम, वर्कोहॉलिक। अच्छा क्या बात है, क्या बात है भाई, हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे गई है। Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment.
really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. भाई जिस तरीके से है ना वो बारके से है ना भागा है, निकला है अपने दुम भगा के और रूम के अंदर छुपा है, मेरे को तो उस पर डाउट हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो है भाई। तो ये इसको हाईलाइट करते हैं जेड दबा के। देखें यहाँ पर है ना सबसे पहले तो ठीक है, बारकोस हैज अ डॉग। ओह ओके, गुड बॉय। Apologies, but I can't hear you. Please come ठीक back है, later. तो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा। ठीक है, मैं समझ गया, छुपना चाहता है तू। Broken recently, judging by the freshness of the wood. और कुछ है क्या इधर पे? I could hardly imagine anything more macabre. यहाँ पर हमें ढूंढना है सबसे पहले तो। ओके, एक मिल चुका है। Finest view London. The finest view on the London has to offer. Okay, लड़की बाजी छेड़ रहा है इधर पे। In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who... An improvised stand, but it does make the flowers more visible. ओके, तीन एविडेंस और मिल गए हमें, 3 एविडेंस और मिल चुके हैं हमें। जेड, अच्छा एक उधर पे भी है, इसे पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ओके, एक एविडेंस मिल चुका है हमें। रुको रुको, और भी दूसरा एविडेंस ढूंढते हैं। लेकिन यार मेरे को एक है ना वायरलेस माउस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर माउस मेरे को बहुत दिक्कत देता है। Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Okay. Barnes has an interesting hobby. 2 एविडेंस और मिल गए, टोटल हमें 5 एविडेंस मिल चुके हैं। Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. और कुछ रह तो नहीं गया ना? चेक कर लेता हूँ एक बार जेड दबा के वापस। जेड से कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ भी हुआ नहीं है, चलो बाहर चलते थोड़ा सा। यहाँ पर ओके मैडम जी। Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. ओ, ये वाले कैटेक्स जो हमें ना डस्टबिन में मिले थे, तुम्हें याद है? वो डस्टबिन वाले। The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. ये वो वाला कैटेक्स है जो हमें मिला था। कहाँ पर? अच्छा ये रहा। The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. नहीं नहीं, हमें इसमें इसके अंदर ही कुछ और ढूंढना है। A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? यस, यही चीज ढूंढना था, यही चीज ढूंढना था। हमें 3 चीज और मिल गई, तो टोटल हमें कितने? Fancy, Mr. Holmes. इनको हम ऑब्जर्व करेंगे पहले। ठीक है, वेयरिंग मेकअप। अच्छा डेफिनेटली यार, लड़की है तो डेफिनेटली मेकअप तो वेयर करेगी, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लग्जरी फैब्रिक, ऑफ कोर्स खुद की शॉप है तो डेफिनेटली लग्जरी पहन सकती है। क्लीन बूट, चेंज शूज अपॉन अराइवल। आंखों के पास डिस्टेंस लुक, अवॉइड आई कांटेक्ट और डिस्ट्रैक्टेड। डेफिनेटली यार, मतलब कि एक चीज तो है कि है ना, रेडी टू मूव ऑन। अच्छा, स्टिल ग्रीफिंग। Mrs. Fleming, you look particularly lovely today.
Is there Is there any reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. और कोई एविडेंस? Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. तो कुछ ऐसा? Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. Yeah. No, not really. Yes, इसने बोला, इसने yes बोला. What does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. I don't know anything about this, sorry. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. 5 एविडेंस अपडेटेड हो चुके हैं. 5 एविडेंस. ओ माय गॉड, दिस इज मतलब कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास. तो अभी हम सी दबाएंगे, अपने ब्रेन में जाएंगे, यहाँ पर जाके सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे. ई फिर ये फिर ई फिर ये. तो ये 3 चीज़ तो मिल चुकी है. फिर उसके बाद हम लोग है ना ये करेंगे, फिर ये करेंगे. तो हमें बहुत चीज़ें मिल चुकी है, बहुत चीज़ें हमें मिल चुकी है. ग्रीन में हम ब्लू में हम ये दबाएंगे और ये वाला इसमें दबाएंगे. ओके, एक और ब्लू और ये होगा हमारा येलो. ओके, हमें चाहिए एक और ब्लू की ज़रूरत. ओके, हो चुकी है. हमें चाहिए एक और ब्लू की ज़रूरत, जो कि हो चुकी है. हमें चाहिए लास्ट. क्या लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? द बर्मस लव. ओ, प्यारबाजी चल रही है, प्यारबाजी चल रही है इधर पे. तो और कुछ मैच नहीं करना ना? ठीक है. Think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. तो हम यहाँ जाएंगे और बांस को बोलेंगे कि बांस भैया जी बाहर आ जाइए. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. ये You ordered पूछेंगे a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You placed flowers in the window to get her attention and Okay. wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest Rest assured, we are assured. not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming.
Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. I have neither the experience nor the interest in navigating the finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. तू बस हमारे को पेपर दे दे और हम सब संभाल लेंगे, टेंशन ना ले छोरे। तेरी लव स्टोरी बाहर नहीं जाएगी, टेंशन मत ले कतई भी। Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. कम ऑन डॉक्टर Hear good news वॉशन। about your ओके, surveillance. तो हमें यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, यहाँ से अभी हमें निकलना है, ठीक है। तो अभी हम निकलेंगे। Marshal Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. ओके, जरूर 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 हम उसको छोड़ के निकल जाएंगे भाई, वो परेशान नहीं होगा। Waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes. जरूर ले लेंगे क्योंकि डेफिनेटली मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तो मैं सारे केसेस लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं केसेस नहीं छोड़ूंगा। But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. आप चलो तो आप रास्ता दिखाओगे, मैं क्या करूंगा? ये देखो क्या चेला है भाई, रास्ता तेरे को दिखाना है, मैं देखूंगा। Not much further now. नॉट मच फर्दर नाउ, कहाँ पर है? अरे आप आगे चलो ना मैड सर। और ये क्या है, यहाँ पर इतनी सारी बिखर गई है सब कुछ। ओके, ये डोल है। Seems to be for me. Unnaturally bent legs, yet they look to They be a look like design choice. choice. Welcome to the hunt. Hey, your street prison and a ranger, another treasure. Okay, The treasure. ठीक है। Used to do lots of those in my childhood for myself and Is it a call for help? a bad joke. Or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? जाना किधर है अभी मेरे को? Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop.
Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the हम लोग आ चुके हैं एकदम करेक्ट लोकेशन पे आया This अभी. is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Can you describe the Komiha? मतलब उसका जो सर्वेंट है उसका नाम Kimiha. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Where does he live? See your servant's bedroom. His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Why would he run Is away? there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did he steal anything? Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. हाँ ये क्वेश्चन बैठ रहा है कि वो पहले कभी भाग चुका था. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Okay, Captain Stenwick's testimony. ठीक है. तो इसने बोला था गार्डन की साइड में उसका घर है, जो कि इस साइड नहीं पड़ता, इस साइड पड़ेगा शायद से, मेरे को लग रहा है. गार्डन की साइड तो इस साइड ही घर है इसका. ओके, आई थिंक वो घर है उसका. तो मेरे को इसके अंदर सर्च करना पड़ेगा कि है ना वो कहाँ गया है. यार वो खुद इतने बड़े मेंशन में रहता है और यहाँ पर है ना वो कर रहा है, क्या है मतलब वो उसको यहाँ पर रखा हुआ है. और कुछ है क्या? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. ओके, दो एविडेंस हमें मिल चुके हैं अभी तक कि वो कहाँ पर क्या कैसे भागा था. दो एविडेंस हमें मिल चुके हैं. जेड ओके, तो वहाँ पर हमें है ना ये चीज देखने मिली है. Is Stenwick really so miserly? ये क्या है? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Nugurus. Oh, bone. Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold.
ठीक है। A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. Give me a That's an opioid, snacks. Mr. Holmes, a narcotic. डॉक्टर कैन यू एक्सक्यूज मी प्लीज? आप मेरे इन्वेस्टिगेशन के सामने आ रहे हैं। Is this a Tanifa, a Maori water spirit? Either way, it's giving me chills. ओके। और नेक्स्ट और है क्या? अंदर ही दिखा रहा है, बाहर तो ऐसा कुछ है नहीं। No air coming through it. जेड और ज्यादा क्या इन्वेस्टिगेट करना है? Stenwick makes his servant live in a tool shed. यू थिंक यू नो समथिंग? अच्छा, यहाँ पर तो ढूंढना ही नहीं हमने, इन्वेस्टिगेशन तो किया ही नहीं। तो चीज तो ये चीज Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो A small navy spyglass. ओके। तो स्पाई ग्लास मतलब डेफिनेटली किसी दूसरे स्पाई का काम हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हमें एविडेंस तो मिल चुके हैं, तो फिर क्या करना। अच्छा, तो ये ऐसे गिरा था, समझ गया। यहाँ पर गिरा था तो इसका फेस जाके उधर लगा। समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है हमें और जगह जो देख के, जैसे ये जगह। Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? This lock is ये quite lock. unusual. It appears that the key should be bent to the right. वेंट टू द राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ होगा। The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. ओके, तो किसी ने चिमनी बंद कर दी, तो शायद से धुएं के जैसे वो पीछे गया और पीछे से वहां से है ना गिर गया। Could have left these tracks. They seem fresh. और ये ट्रैक तो बिल्कुल एकदम नए लग रहे हैं, वो बोल रहा है एकदम नए ट्रैक है। तो Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. ओ शिट, ये चीज जो पड़ी हुई है, कुल्हाड़ी। This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. ये चीज यहाँ पर भी है। Chewing ये ब्लड है? tobacco. अच्छा, च्युइंग टबैको है। और क्या है? अच्छा, A shoe फुटस्टेप्स, print, roughly size 11, with a worn-out sole. शू These प्रिंट, are a शू workman's प्रिंट। boots.
ओके मिल चुकी की प्रिंट Someone हाइडिंग. knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. The door to your garden has an interesting Pin lock. lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Okay. Are you joking? Why would I know this? Do you happen to know Kimahir's shoe size? Shoe size. I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Okay. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Captain? तो दो एविडेंस अपडेटेड, मतलब कि दो एविडेंस हमें अपडेट कर चुके हैं जिसमें से हमें की मिल चुकी है आई थिंक. तो हमें जाके वो की लगानी पड़ेगी उधर पे, मेरे को ऐसा लग रहा है. ओके ठीक है, तो हमें सी दबाना है. सी दबा के हमें ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा. अभी ब्रेन. ओके कितने एविडेंस मिले तुम लोग देखे अभी, कितने ज़्यादा एविडेंस मिल चुके हैं अभी हमें. ये और ये. हमें ब्लू एविडेंस और चाहिए. ब्लू एविडेंस और चाहिए हमें. ब्लू के बिना और नहीं होगा. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are They they are- Kimahir's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. ओके तो हमें दो एविडेंस और मिल चुके हैं जिसको हम लोग अभी कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पर जाके ये चीज़ को हमने लगा दिया इधर पे. तो हमें ये चीज़ यहाँ पर लगा दी है. इसको ये दबा के ये चीज़ यहाँ पर लगा दी है. और हमने ये चीज़ पकड़ के, यार ब्लू नहीं मिल रहा हमें, कोई ब्लू नहीं मिल रहा है. तो गाइस हमें यार फिफ्थ वाला एविडेंस मिल ही नहीं रहा है. हमें ना 4 एविडेंस मिल चुके हैं, फिफ्थ वाला एविडेंस मिल ही नहीं रहा है हमें. तो रुको, यहाँ पर मेरे को कुछ ट्रैक्स दिखाई दिए. तो ट्रैक्स तो शायद से उसी के दिखाई देता है ना. हाँ ये फुट स्टेप से. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. इसको नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट इसने क्या किया. अरे
Surveilling from afar, the intruder waited for a Mystery window of solved. opportunity. भाई Kimmy कितना here टाइम went to लगाना पड़ा? sleep. The man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Yes, of course, I am a detective Sherlock Holmes. What do you expect, my sir? तो अभी क्या जाना है? अभी जाके सीधा बस अपने उसके ओनर को इन्फॉर्म करना है कि हमें ये सब मिला है. अगर उसका ओनर अभी मेरे को बोला कि क्या कर रही हो, जाके अपना काम करो, तो उसके मुंह पर चाटा मारना है. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations to poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. Okay, ठीक है, तो ले आंसर ले. That someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude towards kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. तेरी भैंस की चांटा देंगे ना, तेरी तो दाढ़ी निकल के बाहर गिरेगी बुड्ढे. लेकिन कोई बात नहीं, हमें चाबी मिल चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जाएंगे सीधा उस चाबी को लेंगे और दरवाजे खोलेंगे और एविडेंस करेंगे. लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के लिए. अगर आप लोग को अच्छी ये वीडियो लग रही है और ऐसा इन्वेस्टिगेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं पार्ट 2 में. बाय बाय.